कितना मिलेगा परसेंटेज? 45 45 प्लस. Let's see. 72 के ऊपर ट्राई करेगा. अभी भी बता देते हैं. सर देखो लास्ट टाइम पावर में 67 आया था, फिर 72 पे वापस 67. क्लास से प्राइम कांस्टेंट 70 वाला. बोर्ड एग्जाम में भी वही करना. बोर्ड एग्जाम में पहला विलियम 1 में 79 लाना. नहीं विलियम 1 में पहला एग्जाम ना, तो पहला 65 लाना, फिर विलियम 2 में 79 लाना, और फिर बोर्ड एग्जाम में वापस 65 लाना. ओके, क्या कर रहे थे लास्ट? अरे तो तुम दूर क्यों बैठो? जो भी खा रहे हो आगे आ जाओ. कौन सा क्लाइंट किया? नहीं किया. इसको प्रॉपर्टीज से पता है सर. प्रॉपर्टी होता है. पैंक्रियास. पैंक्रियास. आई सो पैंक्रियास. एंडोक्राइन लिखा है पैंक्रियास ना लिखा है एंडोक्राइन. तो सारे एग्जांपल ये सब हो गया. ये एंडोक्राइन का एग्जांपल दिया था. पैंक्रियास. ये भी दिया था. ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन दिए थे. एंडोक्राइनोलॉजी एड्रिनल ग्लैंड. देखो ये नहीं कर रहा. ये क्या है ये पता है. नहीं तो Okay, we'll not go as sequence. We'll go with the simple one first and then go with the advanced. सबसे पहला जो हम करेंगे वो है पैंक्रियास. ठीक. अब I want timing की 2-5-10 मिनट के लिए बंद कर दूँ. तो उल्टा करके बंद कर दीजिए. बेसिक जनरल नॉलेज. ठीक. हमने कहा था पैंक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. ठीक. पहला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन. Where is the location of pancreas? No. शुक्र है. वेस्ट आंसर हम क्या होगा? नाउ इक्वल बॉडी. सिर्फ ये आंसर सभी के लागू रहेगा एक्सेप्ट वन थिंग. अगर इसका आंसर तुमने सोच लिया ना तो तुम लोग पास. बात है रे, तू पास. Everything is in your body ना, my dear, except brain. थोड़ा और डिबेट तरह चले. ओके, पैंक्रियास पोजीशन वाइज सबसे पहला आता है. इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक इन द लूप ऑफ डिओडी. बुक में इन द स्टमक बिलो स्टमक है, पर प्रॉपर बोर्ड का जो आंसर है वो है in the loop of the duodenum. You can see over here, ये duodenum part है. इस duodenum के loop में pancreas का head fit हो जाता है. So it is below the stomach, situated in the loop of the duodenum. Is pancreas. What type of gland is pancreas? Heterocrine gland. What is the endocrine part and what is the heterocrine part? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. Endocrine and exocrine. एंडोक्राइन क्या? I Now, if I take a cross section of a pancreas, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, बाद में ओपन करके देख लेंगे. This is what the cross section looks like. Can you see this part? क्या लगता है सब? जनरल फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? Good flower. Okay. तो ये these are the flower-like gland cells which are arranged. Okay. इस flower-like cells को अपन बोलते हैं acini. They are the
एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स। अब अगर आप सलीना यूज कर रहे हो तो वहां पे एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स डायग्राम, बट दे आर नॉट रिटन द वर्ड एसिड, हमें ये लिखना है। ओके, एंड द हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल्स are present in the center of the cells. Can you see this part? What is this? That is isolate of Langerhans. Now Langerhans क्या होगा? साइंटिस्ट का नाम कॉमन सेंस। Isolate क्या है? Isolate over here is coming from a word island. जैसे island is center, बाजू में पानी होता है, वैसे isolate is in center surrounded by the cells of acid. So that is why it is known as isolates of Langerhans. अब इस isolates of Langerhans को मैं further magnify करता हूँ, तो I find that all the cells are not same. There are different types of cells in. What are different types of cells in there? Alpha, beta, and delta. So we have alpha, beta, and delta, not alpha, beta, and gamma. ये normally no flow में आप गलती करते हो, alpha, beta, gamma. It is not alpha, beta, gamma. It is alpha, beta, delta. So we should be very thorough with fill in the blank, microcolumn, name the following, whatever. The hormones secreted by alpha, delta, and beta. So alpha, beta, and delta. So what does alpha secrete? Glucogen या glucagon. Beta and delta somatostatin. अब simple way to remember, A alpha, G glucagon. तो हिंदी में अपन बोलते हैं ना, ए जी सुनते हो, वाइफ अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से बोलती है, हिंदी समझो जो समझो, ए जी इज अल्फा ग्लूकागॉन। दूसरा अपन पढ़ते हैं आईसीएस बोर्ड में, शायद है ना, अपने ऊपर कौन सा बोर्ड है? बेटर वर्जन तो आईबी याद रखना, आई फॉर बी फॉर बीटा। और लास्ट थिंग, मोबाइल में चिप के अलावा और क्या जाता है? एसडी कार्ड। सो एसडी, एस फॉर डी फॉर, अगर ये याद है तो अच्छी बात है। Am I clear? So that's about the part of the cells. Okay, up then clearly mentioned. Our syllabus talks about alpha, beta, delta cell. What is secret? नाम पता होना चाहिए. Function not required. Not a part of syllabus. We are not studying somatostatin in detail. We are studying only insulin and glucagon in detail. समझ में आया? Going ahead. तो वही नाम दिए तीनों का, तीनों के सेल्स के नाम। Now principal action of insulin. Now what does insulin does? अपना सब fill in the blanks ही है, but we need to understand that. Okay? आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। So what are two principal actions of insulin? Insulin करता है क्या? breaks down glucose in the blood. Break down glucose in the blood. Okay. और कुछ? Stores glucose in the form of glycagon. Stores glucose in the form of Glycogen. glycogen. Glycogen in the muscles. The muscles. Muscles के अंदर ठीक है। और अब बुक ओपन कर, पहला डायग्राम दिया है, वो कलरफुल डायग्राम है, उसके ऊपर लिखा है एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स, वहां पे एसिड है वर्ड लिखना, आपके बुक में एसिड है लिखा नहीं है, ACINI, here it is, ACINI, पैंक्रियाटिक एसिड है, तुम्हारे में दिया नाम होगा तो लिखेगा ऐसे, give me like acid is not feeling well, what क्या हुआ? इसी के नीचे और पे पंखा भी लगा दे, तो पीछे जाके बैठना जहाँ पे बिल्कुल हवा ऐसी लगी,
तुझे अकेले कोई खाने वाला वैसे भी कौन सा वो ध्यान दे रही है बुक में बोल रहा हूँ सुनने के लिए कहाँ चाहिए ना बुक में थोड़ी चाहिए ओके ऐसी ना एक्स इज पैंक्रियाटिक सेल्स लिखा होगा देखो वहाँ पे ओए तुम तीनों उठो यहाँ पे आ जाओ हमारे बुक का डायग्राम देखने के लिए बुक पास करते हैं दोनों का सेम बुक है अरे ये क्या ये देना एक्सोक्राइन पोर्शन ये एसिन है ये एंडोक्राइन पोर्शन ये आइसलेट्स जा अभी उसको मैं ढूंढ देना उसके में भी होगा अच्छा लेफ्ट वाले डायग्राम में भी सबसे नाम दिया तो नाम तो दी एग्जाम्पल डायग्राम नहीं आएगा मोस्टली डायग्राम के बदले लेबल आएगा और डायग्राम भी आया वैसे ही कुछ दिया जाएगा और सेल्स का नेम करना ठीक अल्फा बीटा डेल्टा रैंडमली कर सकते हो पर एसिन आइसोलेट्स ऑफ लैंगन रैंडमली सेंटर में आइसोलेट्स आजू बाजू में एसिन है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ इंसुलिन देखना क्या लिखा है कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फिर तुम्हारे बुक में सामने लिखा है हां वही दो थी ग्लूकोज प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय बॉडी सेल्स reducing blood sugar level and stimulates deposition of extra glucose of the blood as glycogen ओके अक्सर तुम्हारा बुक पे है नहीं पर इनके बुक में ना एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हो जो हम बड़े प्यार से एग्जाम में लिखते हैं टर्न टू द नेक्स्ट पेज एंड देयर इज समथिंग नोन एज रिमेंबर करके लिखा हुआ है हां पढ़ो जरा क्या लिखा है जोर से it is wrong to जोर से it is wrong to say insulin converts into glycogen instead insulin enables the cells to absorb glucose and use it or convert it to glycogen सब लोग भाग जाते वो का स्पीकर होता है ना उससे भी बेटर था okay then now the first thing what we write by mistake is what is the function of insulin और आप by default ना most of the time you write it helps to reduce blood sugar okay insulin never reduces blood sugar insulin helps to utilize blood glucose okay and second it helps to deposit the glucose in the form of glycogen in the liver or in the body cells am I clear first function of first principle action insulin helps to utilize blood glucose helps to utilize blood glucose second it helps to deposit glucose in the form of glycogen. It helps glucose in the form of there is an MMC hospital where there is a free of treatment 10 rupees treatment जहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं जाके आ एक साथ काम हो जाएंगे आँख भी चेक करवा ये नहीं है ना पर या ओके नाउ ग्लूकोज अगर बढ़ा there is increase in the blood glucose what would happen diabetes condition पहला
हाइपरग्लाइसीमिया। अगर शुगर लेवल कम हुआ तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। इज इट ट्रू? अब चलो नेक्स्ट 5 मिनट एटलीस्ट बोर्ड पे फोकस करो। नाउ आई से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। सबसे पहले एक सेल है, सेल के बाद glucose molecules. This glucose needs to enter into a cell, okay, where it will be utilized by the cell, and that is how the energy will be formed. Now, अगर glucose अंदर जाएगा, यहाँ से निकला और यहाँ पे गया, so what will happen to this glucose within the cell? Oxidized. It will get Oxidized. oxidized. What is the end product? Glucose oxidized. Water. Last year aerobic respiration. What is produced? Energy in the form of ATP. Do I require energy? Yes. Yes. We all require energy to carry our day-to-day activities. Energy कहाँ से आई? Oxidation of glucose. ग्लूकोज कैसे अंदर आया? Insulin. Glucose cannot enter into a cell. It is impermeable to a cell. तो ग्लूकोज ऐसा अंदर आया? No. The cell membrane is semi-permeable or selectively